Hi friends, I'm Arpita Karwa, and in this video lecture I'm going to talk about some tips which can help you manage time effectively on the day of your UGC NET exam. We know that from this time onwards the exam is going to be conducted online and a lot of students are nervous and anxious about the new pattern. So I'm pretty sure that because of this nervousness and anxiety, you might be looking up for some tips which can help you settle your emotion, which can help you to feel more confident for the upcoming exam. So here are a few tips which I have put in a form of mnemonics, and we are going to look at these tips by looking at the word track time. So let's see how you can tackle your exam in an effective manner by using these tips. The first tip is track your time since beginning. Guys, I've seen many students making this mistake that जब वो initially exam देने बैठते हैं so 15-20 मिनट या 10-15 मिनट तक वो बहुत slow speed में question पढ़ते हैं, बहुत आराम से solve करते हैं पेपर, इधर उधर देखते हैं, आगे पीछे वालों को judge करते हैं, and they might start thinking about their lost relationship or maybe their recent breakup, and then suddenly they have this realization that okay, they are sitting for an exam and they've wasted some precious moments, and now in order to compensate वो बहुत जल्दी पेपर करने की कोशिश करते हैं, because of which they sometimes end up making silly mistakes. So it's important that you start tracking your time since beginning. जब आप mock test दे रहे हैं अपने exam practice के लिए, तब से ही ये अपने आप में एक हैबिट डेवलप कर लीजिए कि आप फर्स्ट मिनट से उतने ही कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम देंगे जिससे आपको बाद में अचानक से कॉम्पनसेट करने का काम नहीं करना पड़े. द सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज दैट रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. I've seen a lot of students making some silly mistakes just because they don't read instructions. वो instructions या फिर जो examiner कुछ चीज़ें बता रहा है या फिर अगर कुछ document में कुछ important चीज़ें mentioned है वो सब ignore कर देते हैं क्योंकि maybe they think that ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा तो अब हम क्यों पढ़ें. But always remember, every exam is going to have their own pattern. And by reading the instructions, you can understand the pattern. And since for the first time the exam is happening online, make sure that you carefully read the instructions. Because instructions पढ़ने के लिए आपको उस 1 घंटे में से टाइम नहीं निकालना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है. So why waste that extra time? Why not utilize it and save yourself from making some really silly mistakes? The third important tip is attempt order. Now I've already made a full detailed video in which I have talked about this theory of attempt order. Always remember guys that don't start solving paper from question number 1. You need to play smart and you need to follow a strategy in order to solve the paper. Sometimes we just follow the traditional method of solving it from question number 1, and by the end we reach to the last question, we find that we have wasted a lot of time or we have made a lot of silly mistakes. But if you follow this scientific technique which we know as skim and mark technique, you'll find that you can save a lot of your time, a lot of your energy, and you can also accurately solve the paper within the time limit. So always understand the attempt order. Type 1 questions या type A questions पहले करने हैं, then type B, then type C, and finally type D questions. The fourth important tip is that check questions twice. Now I've seen this thing in a lot of students that whenever they find a question which appears familiar or for which they know the answer already, they'll directly jump to the conclusion. It's important that you read every question twice because the examiner who is setting the question paper, he is smarter than you. So he is going to set some traps so that you might answer it incorrectly. So the examiner is going to not only check your knowledge but is also going to check other skills, and it is going to mark you on that basis. So please make sure that you read every question twice, because sometimes in a question when you read it in a flow, you might skip a word like not. A word as small as not can change the meaning of the entire sentence. So please don't make these silly errors. Even if you know the questions, there's no harm
investing 5 seconds more and rereading the question. And please make sure that you read it carefully, looking at each and every word, because each word has the potential to change the entire meaning of the question. The fifth important tip that you must remember is that keep your things handy. You enter the exam hall with a few of your belongings, your Aadhaar card, your admit card, maybe a water bottle, and there are chances that you might misplace them. Now misplace का प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर आपसे कोई आधार कार्ड मांगता है और आपने यहाँ वहाँ कहीं रख दिया, तो उस टाइम आपको अपना एग्जाम से कंसंट्रेशन हटा के आधार कार्ड ढूंढना होगा, और वो 5 मिनट जिसमें आप वो आधार कार्ड ढूंढेंगे, उस 5 मिनट में आप पता नहीं शायद कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ खो देते हैं. सो मेक श्योर दैट आप एग्जाम हॉल की सेटिंग में थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठे. आपको पता होना चाहिए कि आपकी चीज़ें कहाँ पड़ी है. ये वैसे तो एक बहुत छोटी बात है, बट आई एम टेलिंग यू दैट अगर ये एक छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हैं, सो आपको बाद में रिग्रेट होगा. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेलिंग मी दिस कि हम भाग भाग के एग्जाम हॉल में पहुँचे, लेट उठे, या फिर हमने डिले हो गए हम पहुंचने में, और उस हड़बड़ाहट के चक्कर में हम कुछ भूल गए, या फिर हम एग्जाम हॉल में ढंग से बैठ नहीं पाए, कंसंट्रेट नहीं कर पाए, और हमारा पेपर बिगड़ गया. मैम प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी थी. ना दैट हर्ट्स. आपने प्रिपरेशन करी, आपने 6 महीने डिवोट करे हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन एक छोटी सी गलती जो शायद मायने भी नहीं रखती है, उसकी वजह से अगर आपका पेपर खराब हो जाए, दैट इज गोइंग टू हर्ट अ लॉट. सो आई रिक्वेस्ट यू दैट आप जो भी बिलोंगिंग्स लेके एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, प्लीज़ उसको एक सेफ जगह पे रख दें, जिससे आपको उन बिलोंगिंग्स की टेंशन ना करनी पड़े और आप एग्जाम में पूरा कॉन्सेंट्रेट होके पेपर दे पाए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज दैट टैकल एवरी क्वेश्चन. यूजीसी नेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स, एंड दैट्स अ बिग थिंग. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सेफ हैं, आप फ्री हैं हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आंसर गलत हुआ तो. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपने एग्ज़ाम को में जब आंसर सबमिट करें, उससे पहले सभी आंसर्स में आपने कोई ना कोई ऑप्शन मार्क किया है. बिकॉज अगर आप एक ऑप्शन मार्क करते हैं, 25% चांसेस हैं कि वो आंसर सही होगा. ओके 25% प्रोबेबिलिटी है, एंड अगर आप कोई भी आंसर मार्क नहीं करते, देन 0% प्रोबेबिलिटी है. सो व्हाई नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ डाउट? Please make sure that you have answered each and every question. Tackle every question irrespective of the fact that you know the answer और यू डोंट नो द आंसर. अगर आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए 2 गलत ऑप्शंस को, एंड बाकी 2 ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है उसे मार्क करिए. अगर एलिमिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, तो चारों में से कोई भी ऑप्शन मार्क करिए, बट प्लीज क्वेश्चन छोड़ के मत आइए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज दैट इग्नोर सराउंडिंग. गाइस अंडरस्टैंड दैट आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है. मे बी देर इज़ अ गर्ल शाउटिंग, और मे बी देर आर सम नॉइज coming from the roadside, or maybe the fan is working really slow, maybe there's an annoying smell in the room. इन सब चीज़ों की वजह से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सो आप उन क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन पेपर को अपना 100% नहीं दे पाएंगे. आपके दिमाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक बाकी चीज़ों को समझने में, उनको इंटरप्रेट करने में, उनको एनालाइज करने में अपना टाइम गवा देगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एग्जाम सेटअप में 1 घंटा यू शुड फॉरगेट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन. सो प्लीज रिमेंबर दिस important tip that ignore the surrounding while you are sitting and giving your exam. The next important tip is that please minimize your bio breaks during the exam. Bio breaks are the time when you want to go to the loo or you want to drink water. Now we have a tendency that while we are giving the exam, we have this sudden urge that we want to go to the loo or maybe we want to drink water. Please make sure you've done all these things beforehand so that those 1 or 2 hours when you're sitting for the exam, you are sitting without any distraction. You have no
bodily urges that can disturb you, that can annoy you, or for which you need to devote some time. So make sure that you're comfortable, you're sitting in comfortable clothes, you've done with all those bodily functions, and you are all ready to face the paper and you're all ready to answer the questions. Finally, we move on to the last tip, which is energize yourself. Now guys, it's important that while you are giving your exam, you are calm and you are tension free. It's very easy for a student to get anxious or nervous while giving the paper. When you find questions which you are unable to answer, it's very easy that your brain will automatically start giving you negative feedbacks, but you can consciously energize yourself again and again. You can consciously motivate yourself again and again. And an excellent tip that I would like to give you here is deep breathing. I'm telling you guys, it's a very scientific technique. When you deep breathe, even for 10 seconds or 15 seconds, your brain cells get oxidized. That means they are charged up. They have all the energy available to work efficiently, to give their 100%. होता ये है कि जब भी आप नर्वस होते हैं, एंग्शियस होते हैं, आपके ब्रेन सेल्स में एनर्जी, ऑक्सीजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है या उस स्पीड में काम नहीं कर पाता जिस स्पीड में वो नॉर्मली करता है. जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में पूरा ऑक्सीजन पहुंच जाता है, एंड ऑक्सीजन के पहुंचते ही आपके ब्रेन के सेल्स वापस से बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग जाते हैं. सो व्हेनेवर यू फील नर्वस और एंग्शियस, just make sure that you start breathing deeply, and within 15-20 seconds you can see a change in your mood, a change in your emotional state, and you can see how beautifully you are all set to tackle the next question. So with that note, I would like to take your leave. I hope that the tips that I've shared in this video are going to help you to tackle the next NET exam, and I'm pretty sure that you're going to do really good on the day of the exam. Apart from that, if you have any questions, any doubts, feel free to put that in the comment section below. Subscribe to this channel because I post videos for UGC NET aspirants every week. Apart from that, you can also follow me on the social media platforms. I've made a lot of videos on last day exam preparation. You can check that on my YouTube channel. If you have any queries, any doubts, feel free to ask me because we are here to help you in the best possible manner. So that's it for this video lecture. We'll meet soon in the next video lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature, and stay tuned to arpitakarwa.com.